رانا راشد میں احمدی ہوں. مرزا صاحب نے دعویٰ کدھر کیا ہے؟ میرے پاس ثبوت نہیں ہے. یہ بکواس عمرے کر اپنی دائی چیک کرو، تھلے لا دیو ملک صاحب عمرے تھلے لا اپنی دیو. چیک کرو اور اپنی گفتگو کا طریقہ دیکھو، اپنی گفتگو کا انداز دیکھو، عمرے اپنی دیکھو. سر پہ بال نہیں رہے. عبداللہ صاحب تھوڑے پوتے ورگا ہوں میں. عبداللہ صاحب تھوڑے پوتے ورگا ہوں میں. اور تو پوتے پوتیا رحیل چپ کر جا رحیل پوتیا. رحیل آپ میوٹ کر لو، اس کو جو بولنے بولنے دو. آپ میوٹ کر لو. رحیل کوئی جواب مت دو، میوٹ کر لو، جو بولتا بولنے دو. اے جی نہیں یہ میں بکواس کسی نو کرے گا، یہ کیا ہے بکواس گندی کرے گا نسل نا. دا تے رانا صاحب رحیل بکواس میوٹ میں کرے نے کرو، گا. تو میوٹ گالی کرو، ہے کوئی بات کی، نہیں. یہ میں نے تو میوٹ یہ کوئی بکواس بری کرے گا. بات نہیں کی. میوٹ میں نے کرو، تو میوٹ گالی کرو، مسیح جو نہیں معود بولنے علیہ دو، کی. اکیلے کو بولنے السلام دو. پہ بھوگے گا. یہ رحیل مسیح میری معود بات علیہ مان لو، السلام پہ ڈرامے بھوگے گا. یہ چیک بکواس کرو کرے گا. رحیل اس کے. میری بات مان لو، میوٹ کر لو، مان لو میری بات. پھر وہ میرا پوتا ہے، وہ کیسے چپ کرے گا؟ نہ تمہارے مربیوں کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ تم لوگوں کے پاس دلیل ہے. پتہ نہیں چوڑو والی آکڑ تمہارے اندر کدھر سے آتی ہے، یہ اتنا ایٹیٹیوڈ کدھر سے آتا ہے؟ کتنے دنوں سے سوال ہو رہا ہے ذیل پروز قرآن اور حدیث سے ثابت کرو، وہ تو کر نہیں پا رہے. اور صبح دوپہر شام گالم گلوچ گالم گلوچ گالم گلوچ. ایک براڑ بند ہوتی ہے گالیوں کی، دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری بند ہوتی ہے، تیسری شروع ہو جاتی ہے. یہ مسیح موت کی تبلیغ پہنچ رہی ہے دنیا کے کونے کونے تک. پھر مسیح موعود اپنے سے بھی کوئی عقل نہیں نہ پکڑتے. اس نے بھی مناظروں سے توبہ کر لی تھی، بات کرنے سے مسلمانوں سے توبہ کر لی تھی. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید مسیح موعود کی جگہ کوئی جواب دے سکتے ہیں. جواب ہے نہیں، آپ لوگوں نے دینا کیا ہے؟ گالیاں ہیں آپ لوگوں کے پاس، وہ کھلی ہیں، وہ دیا کرو. حضرت اماں جان مجھے بتاؤ، ایک اصولی بات ہے بھائی، آپ لوگ مرزا صاحب کی کتب سے اور مرزا صاحب کے اوپر لکھنے والی کتب میں سے یا ان کے خاندان کے اوپر لکھنے والی کتب میں سے کسی کتاب میں سے بھی دکھا دیں کہ نصرت جہاں صاحبہ نے مرزا صاحب کی بیعت کی ان کی زندگی میں. جب نصرت جہاں صاحب نے ان کی بیعت ہی نہیں کی زندگی میں، تو وہ آپ لوگوں کی اماں جان کیسے بن گئی، ام المومنین کیسے بن گئی؟ یا کوئی مثال پیش کریں بھائی، مرنے کے بعد حکیم نور الدین کی بیعت کرنے پر وہ آپ کی ام المومنین بن گئی، اس کی کوئی مثال پیش کریں. یوسف صاحب بس ہسنا ہی ایسا، اور کی کرنا ہے؟ ثابت کر دیں کہ نصرت جہاں صاحبہ نے ساری زندگی جتنی دیر وہ مرزا صاحب نے نال رہی نے، انہوں نے مرزا صاحب کی بیعت کیتی ہوئے. اول تے خیر مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی زندگی دے وچ کسے کولوں اپنی نبوت تے بیعت لئی کو نہیں. مسیح موعود دی بیعت تو لندا رہا تے مسیح موعود دے بارے چ کہندا ہے کہ اس دور میں مسیح موعود کے لیے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی گئی. کاظمی صاحب، اپنا رحیل صاحب
देखा फिर बोला। अच्छा रहील साहब क्या कर ये रहे हैं आप? देखो उमर, देखो राणा राशिद की जी जी उम्र रहील राणा साहब देखो। क्या कर रहे हैं आप? अगले दिन कोई आपके कहता पास कोई हम इक़्तिबास आज है के तो बाद नहीं सुनाए। आएंगे, अल इस्लाम से हुसैनी कोई साहब की लाइव पर नहीं आएंगे, हुसैनी साहब सुनाए की आप। लाइव पर नहीं आएंगे। अच्छा ये वो दूसरी राणा साहब, ये आईडी से मैं चला ये गया कहता और हूँ दूसरी कि आईडी से मसीह आ मऊद गया। अलैहिस्सलातु ये उसका इरफान मैं है, देखा ना इरफान। दूसरी आईडी से नहीं आया। तुम ईसा को हमारे खलीफातुर राबे ने फरमाया कि आप सिर्फ ईसा को जिंदा कर दें, हमारी जमात खुद ही मर जाएगी। आप ईसा को जिंदा कर दें, हमारी जमात खुद ब खुद मर इरफान जाएगी। गेट से आप काने आपकी काने जमात काने पहले जिंदा है, इस बारे में कुछ हमारे बताएं। नजदीक तो वो पहले भी मरी हुई है जमात आप आपकी। ईसा हमने क्या अलैहिस्सलाम को मारना है? जिंदा कर दें, हमारी मरो- जमात खुद ही मर जाएगी। हम मरो को खलीफातुर नहीं राबे ने मारते। फरमाया है, हम खलीफातुर राबे ने फरमाया है हमारी जमात खुद ही मर जाएगी, आप ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा कर दें। वो पहले मसीह किधर मौद जिंदा है का तुम्हारी फरमान जमात? किधर जिंदा है तुम्हारी जमात पहले? देख भूसे च लुल्ले तेरे वाल फड़ के मैं थामर खंजीर दी मां दे भूसे ते टकरा मरवावां, तेरी भैन नूं लुल्ल पावां। तेरे कैसर मलक दी कैसर मलक अमर अंजीर की ओदा नाम शुएब राजा ओ भैन खा लोड़ा मसली यूसफी तुहाडे लो ये है मर्ज़ियत, ये है दलाइल के है वो अंबार जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने आप लोगों को दी। चुप कर रहे हैं ना, बकवास कर रहे बेवकूफ इंसान। क्या आप लोगों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये की हिदायत दी है जो पाकिस्तानी कौम कर रही है? चोरी, बेईमानी, दज्जल, रिश्वत, मिलावट, ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। जाले अकबर। मलिक साहब वेख लिया करो, इंज या तो छड़ के ना जाया करो या कोई मॉडरेटर इधर ना वो दे। था, न्यू बैठा हुआ था, वो मॉडरेटर था, बदतमीजी करते हैं ये लोग। नमाज पढ़ने चला गया था। मलिक साहब झूठ बोल रहे हैं, ये पीछे हमने से कोई उसने आके बदतमीजी वो नहीं की। ये राणा राशिद ने गालियां दी हैं। उसने फोटो लगा दी अपना दूसरे इसने ने, पहले humanity इसने ने। उसको बोला कि गंदी नस्ल के, और भी गालियां दी हैं, इसने दी हैं पहले गालियां। यार अब्दुल्ला एक मिनट ठहर तुम खड़ा हो, बोली ना मेरा भी। मलिक साहब सुनते पे हो? जी जी मैं सुन रहा हूँ, थोड़ा बिजी हूँ मैं, थोड़ा माइक म्यूट किया हुआ, बोलो मैं सुन रहा हूँ। अच्छा मलिक साहब की मसा कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਬਰਾਡ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ? ਫੋਨ ਸ਼ੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ ਫੋਨ ਦੀ? ਰਾਸ਼ਿਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਛ? नहीं मैं नहीं सुन रहा। ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ ਬਸ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਫੇਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਾਣਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀ ਹੈ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਵਾਲਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। एक आईडी तो ब्लॉक, एक आईडी तो बाइकाट, दूसरी आईडी तो मलिक साहब मुझे जरा मॉडरेटर बना दूसरी दें। आईडी तो बाइकाट कीता है। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਕਿੱਧਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਰਸ਼ੀਦ ਕਹਿ ਰਾਸ਼ਿਦ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ AI ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? जी जावेद साहब, राजा जावेद साहब क्या हाल है आपके? ठीक है जी जनाब, ਸਾਨੂੰ बहुत ਵੀ ਤਾਂ शुक्रिया, ਸਾਡਾ ਵੀ माशाल्लाह, आप तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया राणा साहब। मलिक साहब क्या हाल है आपका? ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ। नहीं वो अपनी मर्जी का आंदर ने। मलिक साहब किधर हो? ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਭਰਾੜ, ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਸਮੀਰ ਨੇ ਭਰਾੜ ਲਾਈ ਅੱਜ ਇhtਜਾਜ ਚੱਲਣਾ, ਚਲਵਾਓ ਯਾਰ ਉੱਧਰ। ਸਮੀਰ ਨੇ ਭਰਾੜ ਆਨ ਕੀਤੀ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜ਼ਾਹਿਦ ਜਮੀਲ ਭਾਈ। ਉਹ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਉਹਦਾ।
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣੇ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ओए बड़ी ठंड है अब्दुल्ला, बहुत ठंड है अब्दुल्ला। मैं यूसुफ भाई वो भी राशि का नांगरा था ये, इधर उधर छाला मारता रहता। किन्नी यूसुफ भाई किन्नी ठंड है यार? फॉरेन नाइट्स से अगर देखिए और सेल्सियस से देखिए तो 9 है टेम्परेचर। फॉरेन नाइट्स अगर देखो तो माइनस 15 होएगा। रहील है ना, रहील है सब तो अच्छा मैनू जेड़ा अहमदी लगदा ना रहील है। क्यों अब्दुल्ला? वो तो अच्छा लगता है वो अच्छा तो वो पंजाबी उर्दू मिक्स करके गाना करता है। दुखी है, दुखी अमन नजीर दी दुखी है। राणा भी है, राणा राशिद भी साडी दुखी है, बस डरदा ना मरदाइयां तो फिर इन्हों पर्सनल च जाके गाना करता है। राणा राशिद साहब सिर्फ गल करदे ने एआई दे नाल। हाँ कंप्यूटर की गल करदे ने, ह्यूमन इंटेलिजेंस दे नाल गल नहीं कर सकते। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲਿਖਿਓ ਨਾ ਵਿੱਚ AI ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਰਾਣਾ, ਵੇਖਿਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲਤੀਫੇ ਆਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ। रहील आप उठा दें, रहील में उठा लें। कितों उठा ली यही तो मॉडरेटर ही नहीं। मलक साहब रहील को उठा लें। मलक साहब ने मेरी मॉडरेटरशिप ही खत्म कर दी, तो मैं तो कंट्रोल कर। अच्छा किया, अच्छा किया। जो भी गालियां दे उसकी मॉडरेशन क्यों रखे मलक साहब? और राजा जवेद साहब अभी आपने इधर गाली दी। अच्छा गाली क्या हुआ? ये तो तबीयत गाली कैसी नहीं है है। आपकी? ये मैं फजूल बातों का जवाब देना पसंद नहीं करता। एआई से क्या वो गालियां दे, वो भी उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे चलाएं। एआई को कौन सी गालियां मैं दे सकता हूँ और रिकॉर्ड। राणा राशिद साहब अपनी तस्वीर खींच के वो पाओ AI ते वाला की कहती है। कोई बात नहीं, आप मेरी ज़ात के बारे में कुछ भी कह लें, मैं आपको बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन जब आप हमारे अकाबरीन पर आते हैं तब मैं गुस्सा करता हूँ। नहीं आप मेरी ज़ात को कह लें, मुझे गाली भी दे लें, कोई प्रॉब्लम नहीं राणा है। राशिद साहब आपको क्यों गाली देनी? हम क्यों दें गाली आपको? आप दे लें, आपसे अगर कोई सवाल करे उसका जवाब हम क्यों दें आपको कोई गाली? मसला नहीं, पर पहले अपने अखलाक दुरुस्त करें। हमारा इखलाक तो देख लें, आपको गाली नहीं दे रहे लेकिन जब आप हमको गाली देंगे फिर हम वो गाली मैं तब देता हूँ। मैंने क्यों दी थी आपको पता है? हमारे सामने उसने वो लगाई थी, तस्वीर उसने लगाई बाद थी। में लगाई है जो गाली नहीं लगाई है, पहले लगाई थी, इसलिए मैंने उसको गाली दी, अदरवाइज ना मैं इधर ही था। नहीं मेरे भाई, मैं तो आए बाद में हूँ। उससे पहले राहील ने क्या बोला है बीबी नरजस पाक को? वो मुझे नहीं पता। हाँ वो था, आपको नहीं पता? उस वक्त आपने कानों में उंगलियां ठोसी हुई थी। भाई सारी बातें तो नहीं सुननी होती ना, बस अपने काम की बात सुननी होती है। जरूरी तो नहीं है कि जो बंदा आपके साथ ज्यादती करे उसकी भी बात सुनिए। आ जाए चौहान साहब, ऊपर आ जाए। रहील की गाल उठानी पड़ेगी, पता नहीं कौन उठाएगा। कोई मॉडरेटर है तो रहील की गाल उठा लो। राणा तड़प के मार चल। तारक चौहान साहब वेलकम हो गया। ये राणा साहब, अब्दुल्ला एक मिनट, मुझे राणा साहब जी ये अब्दुल्ला की बहुत बुरी आदत है, मरजइयों के घर घुस कर मारता है, बहुत बुरी आदत है इसकी। बस पुरानी आदतें हैं ना, जा ही नहीं रही। चलो आप जितना बोल रहे हैं ना, आप लोग उतने एक्सपोज हो रहे हैं, मुझे तो कोई नहीं है। आप कोई भी लफ्ज निकाल पहले एक्सपोज नहीं, मैं अब्दुल्ला की ये आदत बुरी समझता हूँ, घर में घुस कर ना मारा करो अब्दुल्ला।
मलक साहब किधर चले गए हो? मलक साहब ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਤਬਸਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਤੇ? दे के देखो ना, एआई ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। देखो जी, ये हैं राणा साहब। एआई ने पहले तो डर जाना है। नहीं, ये राणा साहब कह रहे हैं मैं बड़ा स्मार्ट आदमी हूँ, बड़ा खूबसूरत हूँ। क्यों जी राणा साहब, आप खूबसूरत हैं या आप अपने आप को खूबसूरत समझते हैं? मलक साहब आप हैं इधर? मलक भी चले गए। अच्छा, उन्हें अगर अभी मिर्जा साहब को गालियां देना शुरू कर देगा ना कोई, तो फिर उसको माँ बहन की गालियां। अभी आपसे लाइट मोड में बात कर रहे हैं, आप उसकी तरह पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। कहते हैं इंसान जब कुछ बोलता है ना तो अपने नामा अमाल में कुछ ना कुछ लिखवाता है, किसी दूसरे का कुछ नहीं जाता। आपकी जुबान है, आप जो भी बोले, मैं आपको क्यों रोकूंगा? पर जो आपने बोलना है वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका है, राइट? ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਗਿਆ, जो आप बोलते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है ना। हाँ, जो मैं बोलूंगा मेरी जिम्मेदारी। जो माँ बहनों की गंदी गालियां आप देते हैं वो आपकी जिम्मेदारी उस पर है। बिल्कुल। कोई मसला नहीं। तकरीबन 50 साल आप क्रॉस कर चुके हैं, 50-55 साल आपकी उम्र होगी जो मैंने तस्वीर आपके देखी है। और इतनी गंदी जुबान है वल्ला आपकी कि जितनी गालियां मैंने आपके मुंह से सुनी आज तक मैंने किसी को नहीं सुनी। बदतहजीबी इंतहा की। ਕੱਲ ਹਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਕਟਰ ਦਾ ਸਿਸਟਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। उसने बोला एक क्या मरज़ई ने कहा सवाल था? किया ही कि नबी आप करीम तो लोग तो बेगैरत है ना, पता ना आपको? आप लोग बेगैरत वो तो वो बगैरत था जिसने सवाल किया था। नहीं, आप लोग बेगैरत हैं। जानबूझ के उसे ईसाई और को छेड़ा भी, चलो ये देखिए, हम उसको सिंगुलर फॉर्म में तहजीब बता रहे हैं ना, मोहम्मद आप ये सल्लल्लाहु अलैहि तहजीब वसल्लम के अपनी बारे बता में रहे हैं कहा ना, था। बगैरत जैसा लफ्ज बोल के। अगर आपको कोई यहाँ बगैरत कहे तो फिर आपको आईना ही देखना पड़ेगा ना। बेगैरत है। और लोगों को यहाँ पे आप तबलीग कर रहे हैं अखलाकियात। राणा साहब ये कैसी जुबान है? क्यों इस तरह ज्यादती कर रहे हैं? फिर मिर्जा साहब को लोग बोलना शुरू कर देंगे। अपना राजा साहब, आप लोगों में तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मोहब्बत नहीं है। मैं तो हैरान हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आपके बंदे ने उसने शुरू किया था। अल्फाज इस्तेमाल किए थे मर्जियों गलत। में है जिन्होंने नया रसूल नबी पाक ले के आए, बारे जो में। मर्जियों में इतनी मोहब्बत है, हमने नया बोला नबी तो लेकर आ कुछ गए। जाए। आप लोग, आपके लोग बैठे थे, किसी में गैरत नहीं। मर्जियों में इतनी मोहब्बत है कि वो पैरेलल रिलीजन बना लिया उन्होंने। हाँ हाँ, बिल्कुल बता दें। मरज़इयों में तो इतनी मोहब्बत है ना कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल के नया नबी बना लिया, विक्टर ने जिसने खुद भी मोहम्मद होने का दावा कर दिया। उसके बेटे ने मोहम्मद होने का दावा कर दिया। तुम्हारे मोहम्मद इस तरह कहा था, मैंने कहा था तुम अदब से नाम उसने दो। सवाल किसने किया था? सवाल किसने किया था? मरज़ई ने किया था, क्योंकि मरज़ई को पता था ऐसी बात मौजूद है। उसने जानबूझकर उसको बोला। ओए ओ यूसी भाई, ये क्या मरज़ई ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ। ਇਹ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲਾ ਝੂਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ। ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ YouTube ਤੇ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। हाँ वो नहीं तो आने के ठीक है, साथ लेकिन शुरू कर देता सी। लेकिन आप लोग इतने बेगैरत है ना सारे। बेगैरत तो वो है, और ईसाइयों से मिल जाते हैं। आपको शर्म ही नहीं है? महमूद जिसने दुनिया कहा की ऐसी मखलूक है जिनमें शर्म नहीं है। कभी कभी ज़ना कर लिया करते थे। शर्म नहीं है आप लोगों को। बेगैरत तो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद है, जिसने कहा मेरा अब्बा आशिक मजाज था। ये सुनना था ना, रंगीन मजाज। बेगैरत और बेशरम और बेहया तो वो है मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद, जिसने कहा कि मेरे बाप ने एक दफा पलोमर से टॉनिक वाइन पी थी।
ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਗੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਹਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ? ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਸਨੇ की है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਹੋ? मैं तो फिर जवाब दूंगा। शुरू ही आपने किया, नहीं जवाब ने शुरू किया, वाली बात तुमने किया शुरू, वाली बात तुमने किया। आप लोगों ने राना राशिद, जिस तरह सूर की कलवतरियां होती हैं ना दो, तुम्हारे मुंह पर सिर्फ वो 2 कलवतरियां नहीं है, बाकी तुम पूरे के पूरे सूर मुझे कह लो जो मर्जी, उससे फर्क अंदर नहीं पड़ता, कुछ नहीं फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी कह लो। इसलिए तुम बार बार वो बात छेड़ के दोबारा से वही गुस्ताखी करना चाहते। खैर आकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के लोंडों ने पत्थर मारे। तुम्हारा क्या तल्लक है, तुम्हारा क्या तल्लक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? आप पर बस मरज़इयों का क्या तल्लक है? वो भी ऐसे ही बोलते, आपका रवैया वो है। जो मरज़इयों का क्या तल्लक है? मैं कभी अपनी जाती अनाज के लिए, आप देख लें, आप मुझे कुछ भी कह लें, मैं प्रमोट नहीं होता, मुझे कह लें, गाली निकाल लें, लेकिन जब आप अकाबरीन पर आएंगे मैं बोलूंगा, मैं बिल्कुल लोगों ने कर दिया। आज टिकटॉक के ऊपर जो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद जो वो ताइफ का लोंडा था, वो ताइफ का लोंडा था जिसने कहा कि मेरा बाप रंगीन मिजाज था। ताइफ के लौंडे, आमर नजीर है ताइफ का लौंडा, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ताइफ का लौंडा था जिसने कहा था मिर्जा गुलाम कादियानी रंगीन मिजाज है। बशीरुद्दीन महमूद कादियान का लौंडा है। तुम ताइफ के लौंडे हो, आप लोग कादियान के लौंडे हो। रसूल पाक, आप लोगों का किरदार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से बिल्कुल उल्ट है। आप, लेकिन आप लोग का, आपका किरदार बिल्कुल मिर्जा गुलाम कादियानी, हमारा बिल्कुल कुछ नहीं है, हमने कोई गलत बात नहीं की। मैं, आप मुझे 100 गालियां भी निकालो ना, मैं कोई कभी जवाब नहीं देता, कभी नहीं। किरदार में और आपके किरदार में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं है, बिल्कुल सही है जैसा किरदार तो खुदा के सच्चे नबियों पर हमेशा से आप लोग बकवास करते आए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम खुदा के सच्चे नबी हैं, आप लोग बकवास करते हैं, करेंगे। बिल्कुल आपका किरदार उसी जैसा है, आपका किरदार। अगर आप लोगों में देखो थोड़ी सी भी इस्लाह का जज्बा होता है ना, तो कभी भी आप इस तरह की जुबान इस्तेमाल ना करें। तो आपने शुरू किया ना, आपके अंदर थोड़ी सी शर्म याद थी। मैंने क्या शुरू किया बताएं, मैंने क्या कहा? आपने बगैरत कहा लोगों को यहाँ पे बैठे हुए, आपने, हाँ मैंने कहा है, उसकी वजह पूछे ना मुझसे, वजह पूछो मुझसे। आपने विक्टर वाला काम, वजह ये है कि विक्टर ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ऐसे लिया और किसी ने उसे नहीं रोका। मिर्जा गुलाम कादियानी ने भी लिया ना, मिर्जा गुलाम कादियानी। तो उसको रिकॉर्डिंग उसको रोका किसने था? मिर्जा गुलाम कादियानी ने भी उसको रोका किसने था सबसे पहले? उसने बोले थे जब मैंने रोका है, उसके बाद जब मरज़इयों को शर्म आई, जब लिटरेचर में, एक मिनट बात कर लो, एक बंदा बात कर लेना, मैं यूसुफी से बात कर रहा हूँ, और एक मरज़ई को शर्म आई तो उसने भी मेरे वाली बात की। एक बंदा बात कर लेना, ठहर जाओ, एक मिनट ठहर जाओ। चलो जी, राना राशिद, अगर तुमने इंसाफ नाम की एक मैं यूसुफी से कर रहा हूँ बात, तो एक चीज भी है, तुम इधर बताओ। एक बंदा बात कर ले, मैं यूसुफी से पहले कर रहा हूँ, फिर तुमसे करता हूँ। यूसुफी भाई ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ, लेकिन मैं तो करने दो, अगर आप जिस वक्त ज़बान इस्तेमाल की थी मैं उन्हें पहले रोक किया। एक मिनट चुप कर जाओ ना जरा, जाहिद भाई को वीडियो है, ठहर जाओ ना जरा, एक मिनट अब्दुल्ला, एक मिनट म्यूट लगा लो थोड़ी देर प्लीज, बात करने दो। उसको मैंने इसलिए कहा था, जो हम यहाँ पर टिकटॉक में ना, हम एक अदब मलहूज़ खतर रखना था बात करने में। जो लिटरेचर की जुबान होती है ना, वो और होती है। आप लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता। आप लोगों को वो रिकॉर्डिंग उठाओ, उसने क्या कहा विक्टर ने, रिकॉर्डिंग उठा के देखो। मैंने इसलिए कहा था, सबको मैंने कहा था, उससे मैंने अपने लिए तो नहीं बोला, मैं अपनी ज़ात के लिए बोलता। मुझे कहते मुझे आप 100 गालियाँ यहाँ निकाल लो, मैं जवाब नहीं दूंगा आपको, कभी भी नहीं दूंगा। लेकिन जब अकाबरीन पे, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पे, सहाबा कराम, अहले बैत पे कोई भी बात करेगा, मैं आवाज उठाऊंगा, चाहे मुझे आप नीचे फेंके, जो मर्जी मुझे कहें, गाली बाज कहें, मुझे कुछ भी कह लें, आई डैम केयर। अच्छा, होगी बात आप, ये गैरत होती है, ये गैरत आपके अंदर अगर गैरत होती ना, जिस दिन आप उसको कह रहे थे ना कि इल्जामी तौर के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर बहतान भरना,
اور امہات المومنین کے حوالے سے تبرہ کرنا الزامی انداز میں، آپ تو اس کو جائز قرار دے رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے یہ بالکل نہیں، میں نے کبھی ایسے نہیں کہا. آپ ریکارڈنگ چلائیں، میں نے کیا کہا؟ اگر آپ کی ریکارڈنگ میں پیش کر دوں تو میں آپ کو ابھی بھی کلیئر کر دیتا ہوں میں نے کیا کہا ہے. میں کہہ رہا ہوں میں اگر یہ آپ کی کہتا ہوں ریکارڈنگ پیش کر دوں جس کو آپ یہ مان رہے ہو کہ الزامی طور پر آپ نے یہ بات بالکل کہنا پوری بالکل بات جائز ہے۔ پیش کریں. ہاں ٹھیک ہے ہاں تو پوری بات پیش کریں، کروں گا نا، یا پوری میں بات بتا دیتا ہوں آپ کو. اچھا آدھی بات پیش کرنا کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ الزامی طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جن لوگوں نے اس دن بکواس کی تھی، گالیاں دی تھی، آپ نے کہا الزامی طور پر یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے، آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا. میں بتاتا ہوں، یہی میں کام سمجھا دیتا ہوں. سن لو، یہی کام مبشر، وہ جو انا موچی ہے، انا موچی جس نے مبشر رضا کی آئی ڈی بنائی، انا موچی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کے گالیاں دی اور آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا. آپ نے کہا نہیں میں نے کبھی نہیں کیا، ایسی بات نہیں ہے. نہیں اچھا نہیں کیا اس کو، نہیں میں سن آپ نے لیتا اس کو اپریشیٹ کیا. چلیں آپ بات مکمل کر لیں پھر بتائیے نا، باری باری بات کرتے ہیں. نہیں جب آپ بول رہے تھے تب میں تو خاموشی سے سن رہا تھا آپ کی بات. جب انے موچی نے یہ کرتوت کیا تھا تب آپ نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا تھا اور اس کو باقاعدہ دلاسا دے کر یہ کہا تھا کہ تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، بالکل بے فکر ہو، تم پریشان نہ ہو، تم نے جو کیا ٹھیک کیا. تم نے الزامی طور پر کہا ہے تو تمہاری پریشانی کی، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو جس چیز کو آپ خود الاؤ کر رہے ہو تو لوگوں کے لیے کیوں کہہ رہے ہو بغیرت کا لفظ کس طرح آپ نے میوٹ کریں، چھوٹی چھوٹی بات کرتے ہیں نا، میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. اب آپ میری بات بھی سن لیں. نہیں میں آپ سے سمجھنے کے لیے نہیں بیٹھا. ایک تو پہلی بات ہے یہ اپنے ذہن پھر اگر آپ بولتے رہو گے تو پھر آپ بولتے جاؤ، پھر آپ بولتے جاؤ، کیا کر سکتے. ہاں تو نہیں، آپ بات کر رہے ہو جس چیز کو آپ خود، جو کام آپ خود کر رہے ہو لوگوں کو کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، میں اس کو برداشت نہیں کرتا. آپ خود کرتے ہو وہ کام. تو بتا دیتا ہوں نا، بات میوٹ کر رہے ہیں تھوڑی دیر. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر الزامی جواب دینا ہے نا، اس کا ایک ادب سے ایک طریقہ ہوتا ہے. جو بھی غلط انداز میں، تضحیق کے انداز میں دے گا، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اور کہیں سے بھی ہو. لیکن الزامی جواب اگر ہم یہ دیتے ہیں، دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اگر اس دور میں یہ چیز جائز تھی، رسول پاک نے کی ہے، تو پھر ہم وہ مثال کے طور پہ پیش کرتے، پر اس کو بڑے ادب سے پیش کرنا ہوتا ہے. بس اتنی سی بات. جو اس میں ادب کا کوئی ایک تو یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ایسا کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. ایک تو یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں، میں کسی جنرل بات آپ اپنے آپ پر کریں نا. آپ دیکھیں جنرل بات آپ اس طرح کریں نا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کیوں بات کریں؟ آپ مرزا صاحب کریں نا. مرزا صاحب جیسے گالیاں دیا کرتے تھے، انہوں نے الزامی طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قرآن پاک میں بھی گالیاں لکھی ہوئی ہیں. قرآن پاک میں گالیاں لکھی ہوئی ہیں. یہ مرزا صاحب لکھی ہوئی ہیں. قرآن پاک میں گالیاں لکھی ہیں. قرآن پاک میں گالیاں لکھی ہیں، نہیں لکھی ہوئی؟ یہ میں کہہ رہا ہوں یہ ہے بغیرتی. یہ مرزا صاحب کا عقیدہ ہے. بتاؤ، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ مرزا صاحب کا عقیدہ ہے کہ ان کو قرآن پاک میں گالیاں لکھی ہیں کہ نہیں لکھی؟ بتاؤ. نہ ہی لکھی ہوئی. مرزا صاحب کا ذہنی اختراع تھا یہ. مرزا صاحب کے ذہن کی نہیں. آپ بتاؤ قرآن پاک میں لفظ ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ. کوئی لفظ سخت الفاظ ہیں کہ نہیں؟ آپ کو بار بار کیوں کر رہے ہو؟ مرزا صاحب نبی تھے، انہوں نے اس حوالے سے جلالی رنگ میں لکھا ہے. ہم نہیں کہتے، ان کو ہر جگہ پہ گالیاں نظر آتی تھی. ہم نہیں کہتے. قرآن تو برہان ہے، قرآن تو فرق کر دیتا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. تو مرزا صاحب بھی اللہ کے نبی ہے نا، تمہیں کیا پتا ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، سچے رسول ہیں. یہ نہیں قذاب سچے رسول ہیں. نعوذ باللہ ان کو ان کا ڈیزگنیشن ہے، انہیں پتا ہے انہوں نے کب کیا کہنا ہے. تم لوگوں کو کیا پتا ہے؟ جب شیطان ان کو ہم نہیں کہہ سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے تھا تو ان کو قرآن کے اندر سے گالیاں نظر آتی تھی. نعوذ باللہ. یہ تو سارے مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے، رسول پاک کو ایسے ہی کہتے تھے. طائف کے لونڈے ایسے ہی کہتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ تو وہی ہو جو نبیوں کو انکار کرتے ہو. آپ لوگ نبیوں کو انکار کرتے ہو. آپ لوگ وہی کام کرتا رہا، آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں. نبیوں کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں. وہ خدا کے سچے نبی اور رسول ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا کے سچے نبی ہیں. لعنت اللہ علیہ. لعنت تم پر جو ان کو جھوٹا کہتے ہو. ہاں تو ہے ہی جھوٹا، وہ نہیں جھوٹا ہے ہی جھوٹا. کہتا ہے قرآن پاک کے اندر مسیح موعود کا ذکر ہے. کہاں پہ ہے مسیح موعود کا ذکر قرآن پاک میں؟ یہ جھوٹا ہی ہے. مشرکین مکہ بھی رسول پاک کو یہی کہتے تھے. رانا صاحب مشرکین مکہ بھی رسول پاک کو یہی کہتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے. آپ لوگوں کو تو مشرکین مکہ والا رویہ ہے. آپ لوگ ہو کبھی غور کرنا، کبھی غور کرنا. بھائی آپ لوگ تو سنت ادا کر رہے ہو نا. مشرکین طائف کے لونڈوں کی کہانی پڑھنا اور دیکھنا جس طرح تم کٹھے مل کر آتے ہو اور باتیں کرتے ہو نا، یہ وہی ہے سارا. غلام قادیانی نے کیا جیسے طائف کے لونڈوں نے کیا نا.
सेम वही कहा मिर्जा गुलाम कादियानी ने, आज की तारीख में वही किया, और आप लोग भी इसकी सुन्नत अदा कर रहे हैं। आप लोग सबके करो, इन साथ। चीजों से फर्क नहीं पड़ता, जो भी कह लो। हाँ तो यही तो है ना, इस्लाम को क्या फर्क पड़ जाना। आप अभी आपके पास दलील नहीं है ना, कोई भी दलील नहीं है तो आपके इधर पास चले नहीं है, कौन सी जाते हैं। दलील आपने दी है? मिर्जा हमारे गुलाम पास तो कादियानी हज़ार की दलील मैं है, आपके सामने रख रहा हूँ, हमारे आपने पास तो कौन सी है दलील दलील है। दिया? और मैंने तो आपके कुरान पास पाक में है गालियां, कुरान क्या पाक के करोगे? अंदर आपको नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक में अल्फाज लिखे हैं ये ऐसे जलाली नहीं तौर लिखे पे, हुए, नहीं लिखे लिखे हुए हुए। हैं। ये मिर्जा साहब के ज़हन की गलाजत थी, बल्कि कुरान पाक के अंदर ऐसा कोई लफ्ज नहीं। तो आप लोगों की ज़हन की गलत है। मिर्जा साहब के ज़हन के अंदर गंदगी थी, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान के अंदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान के अंदर नाउज़ुबिल्लाह मिर्जा साहब को गालियां नजर आती थी। किसी और मुसलमान को आज तक कोई इस तरह की बात नजर नहीं आई। निकाल के दिखाओ फिर मैं अल्फाज बताओ, निकालो। तो मिर्जा गुलाम कादियानी की बातें सुनाओ ना। कुरान पाक के अंदर तो नाउज़ुबिल्लाह कोई ऐसा गलत लफ्ज नहीं लिखा हुआ। कुरान पाक का तो एक हरफ पढ़ने के 10 नेकियों का सवाब मिलता है। मिर्जा गुलाम कादियानी, मैं वही कह रहा हूँ, वो गलत नहीं है लिखना ऐसा, खुदा ताला को इख्तियार है लिखने का। इस तरह खुदा के सच्चे अल्लाह अंबिया रब्बुल को इज़्ज़त ने इख्तियार है। बर्तन नहीं सुनाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं सिखाया कि आप मुसलमान जो है ना वो एक दूसरे को गाली गलौज करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया है। ये मिर्जा साहब, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मिर्जा साहब के ज़हन की गलाजत थी जो मिर्जा साहब को ये गंदगी नजर आती है। अच्छा, ये कह रहे हैं कुरान करीम में गालियां, उधर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता है अगर शरीयत मुझे न रोकती तो मैं तुझे गालियों से फना कर देता। अगर शरीयत गालियों से रोकती है तो फिर तुमने राणा राशिद कहाँ से साबित कर रहे हैं कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कुरान में गालियां? ऐसे बेगैरत हैं ये लोग, धोखेबाज, फराडी, लो सरबाज। तो सरकारी काफिरों की बात कर रहे हो? मुखालिफिन की औरतें कुत्तियों से बढ़ गई, जो गाली तुम मुझे देगा वो गाली तुम मुझसे सुनेगा। एक मिनट अच्छा, ठहर जाओ, एक ठहर बात जाओ। देखो। ये रहील अहमद से सिद्धू जट नहीं, वो चले गए हैं। रहील अहमद से अब अब्दुल्ला 1 to 1 बात करेगा। ये रहील अहमद, ये क्या बात है? एक दफा तो ये कहना अगर शरीयत मुझे ना रोकती तो मैं शर्म तुझे आनी गालियों चाहिए, से शर्म मना आनी कर चाहिए। देता। एक अहमदी तो बंदा था, दूसरी सारे बार सरकारी कहना- रल मिलके उस पे पै दूसरी गए बार थे, कहना- सारे दूसरी सरकारी बार पै गए कहना- थे उस पे रल मिलके, दूसरी बार सारे कहना सरकारी कि रल मिलके पै गए थे एक अहमदी पर। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। डूब मरो सरकारी में, डूब मरो। दूसरी बार कहना कि जो गाली तू मुझे देगा वो गाली मुझसे सुनेगा। हमारा उस्ताद तो ये ऐसा नहीं क्या है, है? अल्लामा आमिर नज़ीर तो ऐसा नहीं है जिस तरह गंदे शागिर्द हो उसके। तुम्हारा उस्ताद आमिर नज़ीर तो ऐसा नहीं है जिस तरह तुम गंदे हमने शागिर्द हो आपसे उसके। कौन तुम पे सी लाना तो सरकारी अच्छा, हो, आज बताओ तुम पे लाना तो सरकारी छोड़ो। सरकारी हो, तुम पे लाना तो। रहील, सरकारी काफिरों का ये बंदा- बताओ तुम नुसरत जहां साहिबा को अपनी अम्मा जान मानते हो? सैयदा नुसरत जहां बेगम साहिबा उम्मुल मोमिनीन है। और नरजिस बेगम के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो तो लौंडी थी अच्छा, ना, अभी- वो तो लौंडी थी। वो भी नुसरत जहां भी हकीम नूरुद्दीन की लौंडी हैं, उन्होंने खुद लिखा हुआ है। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੜ ਲਿਆਣੇ ਦਾ ਗਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੜ ਲਿਆਣੇ ਦਾ तूने नुसरत जहां बेगम साहिबा के वो बारे ये में लिखी हुई है सारा बात। दिन भोगता है। तेरी भैन ਨੂੰ बोलो लड़ फिर लियाने ये ਦਾ गश्ती किसने ਦਾ लिखी है ਬੱਚਿਆ, बात? दलिया उसको तेरी गाली- भैन ਨੂੰ ਜਾ ਗਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆ, ਜਾ ਦਲਿਆ तेरी भैन ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹ ਲੰਨੀ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆ दलिया। तू नुसरत जहां बेगम साहिबा पे भोग रहा है, तेरी औकात है कंजरी दे बच्चिया दलिया। वो नुसरत जहां साहिबा की ये खुद की बात है कि मैं हकीम नूरुद्दीन की लौंडी हूँ। सुभान अल्लाह। उसके बाद में नुसरत गश्ती जहां दे साहिबा बचिया, ने अपनी गश्ती दे पूरी बचिया, मैं अभी कुछ ओए, बोलूंगा गाली ना तोहीन दो, कर दे, गाली तोहीन का गाली इल्जाम ना लगाएगा तू। गश्ती दे बचिया दलिया, नुसरत जहां बेगम साहिबा गाली ना बोलता है दो। तेरी भैन दी पुद्दी गश्ती दे बचिया कंजरी दे ओए, लन ले आने दिया गश्ती दे बचिया दलिया। ललियानी दिया मिर्जा गुलाम कल्याणी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की पूरी जिंदगी में नुसरत जहां साहिबा ने उनकी बैत नहीं की मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की, तो वो तुम्हारी अम्मा जान कैसे बन गई? दलील पेश करो मर्जियो। आ तेरी भैन ਨੂੰ लन ले आने बच्चे, तेरी मां ने तेरी बैत की है, कंजरी दे बच्चे तेरे बाप दी बैत की है, तेरे प्यू दी बैत की है, कंजरी दे बच्चे दलिया। तेरी भैन ਨੂੰ लन ले आने दिया गश्ती दे बच्चिया गश्ती दिया। ललियानी की बात ही ले आया।
क्या आप बात। मसीह मौद गालियां का और होने का गालियां। दावा तो नहीं करने वाले रहील साहब? यार ये गालियां आप दे रहा मुझे मैं गालियों से फना करना चाहते हैं? गश्ती ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੀ ਮੱਸੀ ਮਾਉ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਂਦਾ ਗਸ਼ਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਪਿਓ ਨੇ ਮੱਸੀ ਵੇਚ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਦੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਪਿਓ ਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੱਸੀ ਕੰਜਰੀ ਮੌਤ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਲਿਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬੱਚਾ मैंने ਮੱਸੀ एक ਮੌਤ ਨੂੰ असूली ਗਮਲਾ सवाल दादा मैं एक असूली सवाल रखा है वही नुसरत जहां साहिबा ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁद्दीन ਦੀ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁद्दीन की लौंडी हूं ਕੀ ਬਾਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਬਰਦਈਓ ਗਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸੱਚ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆਣੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ रसूलों की वो बीवियां उम्मुल मोमिनीन हैं जो ईमान वाली हैं रसूलों की वो अज़वाज तो उम्मुल मोमिनीन नहीं है ना जो उन पर ईमान ही नहीं लाए जिन्होंने बैत ही नहीं की उनकी ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਜਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਰ जी नसरुल्लाह साहब की हाल है ठीक ठाक हो नसरुल्लाह साहब सवाल थोड़ा सख्त है सुनने च सख्त है लेकिन एक असूली सवाल है कि मिर्ज़ा साहब की तहरीर दे विचों बाकी भी जितना भी लिटरेचर लिखा गया है जमात अहमदिया ते या जमात अहमदी वालियां ने उस किधरे भी नहीं लभदा कि नुसरत जहां साहिबा ने मिर्ज़ा साहब की बैत की है उन्हां दी जिंदगी दे विच ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁद्दीन ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਯਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਸੂਲੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਮਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਨੂਰੁद्दीन ਵਾਲੀ ਉਹ ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਨ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਨੂਰੁद्दीन ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁद्दीन ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੈਤ ਲਈ ਕੀ ਪਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਵਾ ਸੀ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੈਤ ਲੈ ਲਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਲੈਣਾ ਦਾਦਾ ਇੰਜ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਤ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੈਤ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੈਤ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੈਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਬੈਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਦੱਸੋ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪੁੱਛਣੇ ਕਦੀ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲੀ ਸਵਾਲ ਹੈ कि बार बार आने नुसरत जहां साहिबा उम्मुल मोमिनीन ने नुसरत जहां साहिबा अम्मा जान ने साडे किस तरह ने मिर्जा साहब दी पहली बीवी क्यों नहीं है ਤੁਹਾਡੀ अम्मा जान और उम्मुल मोमिनीन ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਭਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ नहीं खुद मलिक साहब खुद भी परेशान ने सवाल तो नहीं ये गल जेडी मैं कर रहा दादा साहब जे अब्दुल्ला जिस वक्त तक सही गल्लां करदा रहेगा दलाल नाल इस वक्त तक कोई बंदा नहीं रोक सकता मलिक साहब दा असूल है सही हो गया कि दलाल ठीक दे रहा है
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। तेरी पार्ट कर खलीफा भी आया है, सरा खलीफा ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇੰਜੀ ਹੈ, नहीं ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਬੈਤ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ। थल्लो चौधरी साहब ने ਕਿਧਰੇ बोला ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਨੀ ਆ, ਰਸੂਲ ਮੰਨਨੀ ਆ, ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਮੰਨਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, थल्लो वाले भी चुक लो ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ चौधरी ਗੱਲ ਬੰਦਾ साहब ਕਰ नु ਸਕਦਾ ਹੈ। जे मजा लेना है मजा चौधरी साहब कहते मैंने चुको ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿਖਾਓ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। थल्ले कहता मैंने चौकना मैदान ना हो कह रहे नसरुल्लाह साहब पता नहीं मोडिएटर कोई नहीं और कोई या मैंने भी चुकया किसे ना जमील साहब क्या हो गया, तबलीग क्यों बंद हो गई है? कोई बंदा गाली ना दे। नसरुल्लाह साहब ਤੁਸੀਂ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਉਮੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿਖਾਓ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਔਰ ਵਹੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਮਦੀ ਨੇ नहीं लिया पा रहे क्योंकि है ही नहीं, सिरे तो है ही नहीं कोई इल्हाम या वही मिर्ज़ा साहब दी ऐसी जिस मिर्ज़ा साहब ने अल्लाह ने मुखातब करके क्या हुए कि ए मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी तो नबी और रसूल है, तुझे लोगों की तरफ नबी और रसूल बनाकर भेजा है। जिस तरह कुरान करीम दे विच बाकी रसूलों को मुखातब किया, अल्लाह ने बाकी अंबिया को मुखातब किया तो उन्होंने बारे दसिया और दावा भी मौजूद है रसूलों का कुरान करीम दे विच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला साहब, जितनी देर मेरे भाई ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਚਾਹੇ ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਸਖਤ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲਓ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਈਜ਼ ਆਨਸਰ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣਗੇ।
क्योंकि लेकिन तेरा सवाल बनता जरूर ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈਣੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਲਮ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ पहले की सी बाबर भाई दोबारा क्या दोबारा दोबारा दसो ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਸਾ ਸਾ ਪਤਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਲਾਣਾ। मेरा नहीं ख्याल कि अज गल है हाँ हाँ बिल्कुल भी नहीं। नसरुल्लाह साहब ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜਿਨਸੀਅਤ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੇ, लेकिन अपनी कुड़ी नहीं दे रहे। नहीं अपना ए तो फिर यार अब्दुल्ला थोड़ा मेहर ना हो गया। इसका पता मेरी गल सुनो दादा जी, पहले लोगों को मैं भी नहीं इसने पता कि हाँ ये दोहरा मयार है ना। मेरी अब्दुल्ला भाई एक मिनट, अब्दुल्ला भाई एक मिनट। फर्ज करो तुसा शादी कर, तुसी अहमदी हो, गैर अहमदी च ब्याह करता है। हुन अगले नु पता नहीं ਤੁਹਾਡਾ 16 ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸਾਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। हाँ इन्होंने क्या है कि वो अपने बेटे का जनाजा नहीं पढ़िया, अपने बेटे का, अपने बेटे का तो मेरे इल्म च नहीं, मेरे इल्म च है। मेरे इल्म च है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। मिर्जा साहब की गल कर दियो राजा भाई, राज पढ़ गए किसने? अच्छा वैसे कि अल्लाह ना सॉरी मैं थोड़ा कम ना कर रहे, ਤੁਸੀਂ किस ਦੀ ਗੱਲ कर रहे हो? मैं मलक कमान, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। हां ना ना मलक साहब ने नहीं पढ़िਆ, नहीं पढ़ਿਆ। अल्लाह ताला जिंदगी ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਾਡੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਆਪ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜਿਆ। ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟੈਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਤਾਲ ਮਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। और ये दस के बड़ा फख्र महसूस करते हैं। और फख्र वैसे तो जी सीधी गल है, वो मिर्जा साहब की यह तलीम है जो वो कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं मिर्जा साहब के मुताबिक। लेकिन वो नहीं अपने अकीदे के मुताबिक अगर वो चल रहे हैं, बड़ी कुर्बानी है ब्रदर, छोटा काम नहीं है। नहीं कुर्बानी तो नहीं है क्या जा सकता, जहालत क्या जा सकता। अब्दुल्ला एक सेकंड रुको ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਲਾਣ ਵੀ ਹੋ, ਉਧਰ 16 ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਥੋੜੇ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। और नहीं मेरा नहीं ख्याल कि ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿਓ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ। नहीं इंज नहीं है बबर, इंज नहीं है। पहले तक जो तक रोकिया नहीं ना गया अपना अब्दुल्ला ते उन्नी देर तक ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਲਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਖਲੀਫਾ ਸਾਲਸ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਹੋਇਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤਾਬ? ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਅਸਲ ਹੈ ਵੀ नहीं ਗੱਲ ਸੁਣੋ, अब्दुल्ला अब्दुल्ला से पहला बहुत सही जा रहा था। अब्दुल एक मिनट बाबर अली, बड़ा सही जा रहे थे लाइन ते ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ। ਲੋਕ ਜਮਾਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। दोबारा ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ क्यों कट रही है जी यार अब्दुल्ला? क्या मेरा नेट खराब तो नहीं? अब्दुल्ला भाई सवाल दोबारा करो। ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਦਾ ਮਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਦਾ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ यार बबर अली एक मिनट अब्दुल्ला ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। हाँ जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हुण आई अब्दुल्ला। अच्छा मैं कह रहा कि जमात 'ਚ ये भी बुजुर्ग इस तरह के मौजूद ने जिन्होंने बुजुर्ग की जवान भी मौजूद ने ऐसे जिन्होंने इल्म ही नहीं कि मिर्जा साहब का नबूवत का दावा है। वो खुलेआम कहते हैं कि असं मिर्जा साहब को नबी सानू तो पता ही नहीं।
ਇੱਥੇ ਸਈਦ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਮੁਰੱਬੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਉਜ਼ੁਬਿल्ला ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੁਰੱਬੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਲ ਗਿਆ ਭਾਈ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਹਿਮਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਸਮਝੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇ ਉਹ ਸਮਝਾਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਲਾਂਗੇ ਖੋਜੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਅਮਜਦ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਮੁਰੱਬੀ ਹੈ ਆਪ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸਈਦ तलत भाई किधर के है मलिक साहब तलत भाई पता नहीं किधर गए ज्यादातर टिकटॉक ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀ ਜਮਾਤ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਬੱਬਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਖਾਸ਼ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰੀਆ ਉਹ ਭਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਵਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ वालेकुम सलाम मलिक साहब अब्दुल्ला भाई ने दो सवाल किए ने सवाल बहुत सख्त ने अब्दुल्ला साहब की अक्ल है जे सवाल करेगा हैं दसो जी सवाल दसो जी सवाल सवाल मेरा है साथी कह रहे हैं अब्दुल्ला का सवाल का जवाब ले लेंगे सानू मेरा वीर तू सारी उम्र बोलता रही सवाल करे जी मलिक साहब सवाल मेरा है कि ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਉਮੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਕੋਈ ਮੁੱਦਈ ਨਬੂਵਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੈਅਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ अम्मा जान बन जाती है मुझे एक बात बताओ बेवकूफ़ इंसान अक्ल नहीं तो मौजी मौजा हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है हम उनके उम्मती बन गए हैं उन पर ईमान लाकर वो जाहिल अकबर नबी पर ईमान ला के उसकी ज़िंदगी में हो या उसकी वफ़ात के बाद हो जो उसकी तालीम होती है उस पर ईमान जो भी ले आएगा उसका उम्मती बन जाता है उसका मानने वाला उसका पैरोकार बन जाता है ने सवाल क्या किया एक पैरोकार की बात नहीं हो रही इधर कुरान करीम में असूल है कि रसूल की अज़वाज और अज़वाज को क्या करें तुम्हारी हमारे ईमान कैसा थोड़ी है अज़वाज है तो हम क्या करें हमारे ईमान कैसा है कुरान करीम की वाज़ेह आयत है ये तुम्हारी माएँ हैं यार ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਬੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ आई समझ यानी फिर जेड़ा कुरान अच्छा सबसे पहले तो अब्दुल्ला साहब और अब्दुल्ला जी और शेख शादी कर सकता सी अब्दुल्ला सबसे पहले वो हवाला ले आओ सबूत दो सबसे पहले आगे बाद में करेंगे कि अम्मा जान उन पर उनकी याद में मान नहीं लाई थी वो ले आओ हाँ जी क्या कितों तुसी ले आ रहे हो हम हमारे पास सिर्फ एक ही तुम्हारे पास तो मैं क्या करूं मैं आगे भी दिखाओ टेक्स्ट लिखा सी बात तो सुन लेना मलिक साहब चिंगे लाना पैंदे हो मलिक साहब साडे कोल इको हवाला मौजूद है कि साडे कोल वाकई है मिर्जा साहब दे मरण तो बाद उन्होंने हकीम नुरुद्दीन पिट्टो ने साहब दी एक बैत करके की गल करो हां क्या अब्दुल्ला दोबारा दोहराओ तेरा नाल मिर्जा साहब के मरने के बाद उन्होंने हकीम नुरुद्दीन की बैत की हकीम नुरुद्दीन कौन थे आपको पता है जाहिल अकबर वो जो मिर्जा साहब पर ईमान रखता वो हमारे पहले खलीफा बने हैं तो उनकी आदमी बैत होती थी ना जाहिल अकबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों ने हजरत अबू बकर के हाथ में बैत की या नहीं की अक्ल नहीं तो मौजा कोई अक्ल वाला बंदा है क्यों
मैं मलिक साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ बैत की है पहले खलीफा पे नहीं की, इसका ये तौर है, बताओ। मिर्जा साहब के बाद मिर्जा हकीम नूरुद्दीन पे की है, मिर्जा साहब पे की नहीं बैत। और जाहिल अकबर, तुम्हें ये हवाला कहाँ से लेके हवाला लेके आके मोहम्मद उन्होंने हजरत गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम के हाथ बैत नहीं की थी, वो हवाला लेके आओ, दिखाओ। नहीं की ना, है ही नहीं ना कोई हवाला कि उन्होंने बैत की। तुम झूठे, फिर इतने झूठे बेईमान हो, डिसऑनेस्टी है बात अपना हम मान अब्दुल्ला। अगर इंज करे तो सबूत तो बगैर गल कर रहे हैं, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ। ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਵਾਲਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਹੁਣ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ। हवाला आपने लाना है, जिस आपके मुरब्बी नहीं कहते हवाला आप देना है, हवाला आप देना है। मलिक साहब ज़िया भाई नु चुको, ज़िया भाई नु चुको, मैं वहाँ दोनों हवाला ले देना। पागल हो गई, हवाले दिन ज़िया भाई नु चुको, ज़िया भाई नु चुको, मैं देना दोनों कोई अकल वाला बंदा लेके आओ, आगे मुफ्ती साहब छतरोल खा के गए और सिर्फ हवाला मैं लेके दिया ਤੁਹਾਨੂੰ मलिक साहब, हवाला सिर्फ लेके देना है, ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਚੁੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੂਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਤਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਵਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ। ਉਧਰ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਜ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ। बुलाओ, चित्रोल करेंगे ये तो भाई को ऊपर नहीं लाना। मलिक साहब चुੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ, ਦੇਖ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਉਹ ਜੀ ਜ਼ਰਫ ਹਵਾਲਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ ਐਨਜੀ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਇhtਰਾਮ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਬਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ 10ਵੀਂ ਦਫਾ ਗੱਲ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਚ ਅਕਲ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਬਾਬਰ ਅਕਲ ਹੀ 75 ਦਫਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰੀ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਾਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੋ। ओ यार मेरे को सुबह सुबह ना सुनी, मैं कुछ कहना अब्दुल्ला सरकारी बेशर्मो और सरकारी बेशर्मो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਆਂ ਪਿੱਟੋ, ਰੈਡ ਬੁੱਲ ਪੀਂਦੇ, ਚਾਰ ਰੈਡ ਬੁੱਲ ਪੀਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਲਕ ਕੋ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਯਾਰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਚਵਲਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੇ। और राजा साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਆਂ ਪਿੱਟੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਸਮੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰਾਜਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲ ਧੋਈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਜੀ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲੈ मलिक साहब सबर करो, मैं तो हवाला ले दिया। ज़िया भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़िया भाई मैं सवाल किया है कि नुसरत जहां साहिबा ने अपनी मिर्जा साहब की जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁद्दीन ਦੀ ਬੈਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮਾ ਜਾਨੀਆਂ ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ? ਜੇ ਉਹ ਬੈਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸਵਾਲ ਦੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਲੋਂਡੀ ਸਨ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਬਣੀ, ਨਿਕਾਹ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੱਕ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। बंदे शाह भाई एक सेकंड, जाहिल अकबर, ओ जाहिल अकबर, ओ जाहिल अकबर, ਸਿੱਧਾ ਗੁਸਾਹੀ ओ जाहिल अकबर, ओ जाहिल ज़िया सरकारी भाई कोई अकबर। वाला मौजूद है कि नुसरत जहां साहिबा ने मिर्जा साहब की बैत की थी? वाला तो ज़िया भाई आसमान तो लेके आएगा, ज़िया भाई आसमान तो ये वाला लेके आएगा। बात ये है नबी रसूलों के बारे में ऐसी बातें ना करो, खुदा का वास्ता। जो हमारी इस वक्त की बातें जो मुखालिफिन सुनेंगे ना, तो इसके मतलब और निकलते हैं, हाँ, ना करो, जी। खुदा का वास्ता। सवाल अब्दुल्ला जिन्नी देर तक करीने च रहे ना
ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਬ ਔਰ ਇhtਰਾਮ ਨੂੰ ਮਲਹੂਜ਼ੇ ਖਾਤਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੋਈ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਤੇਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਦੂਸਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਸਨ ਨਾ, ਤੂੰ ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ। ਦੇਖੋ ਨਸਰੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਨ।